Hi, are you looking to buy a property and you do not have the time to do the site visits? Well, we will do it for you right here at Property Cloud. और आज मैं एकता कपूर आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसे ही वर्चुअल साइट विजिट पे। अब ये वर्चुअल साइट विजिट क्या होता है ये आप थोड़ी देर में जान ही जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त मैं हूँ JNPT के न्यू हाईवे पे। लेट्स टेक अ लुक एट द रोड फर्स्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारा का सारा डेवलपमेंट। The whole land parcel is of 16 acres and जो टावर्स आप देख रहे हैं there are going to be total 8 towers। यही है वो टावर्स जो हमने बाहर से देखे थे। अब ये टावर्स हमने बाहर से देख लिए, यहाँ पर देख लिए। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है 1 BHKs, 2 BHKs and 3 BHKs as well. So you have the liberty to choose from so many options. Now the 1 BHK starts from approximately 400 square feet area and the pricing starts from 54 lakhs onwards. The 2 BHK variants start from approximately 600 plus and the pricing is 75 lakhs onwards. And the 3 BHKs are 900 plus square feet area and the pricing starts from 1 crore 16 lakhs onwards. Now these pricing, I know that they sound very interesting. What is more interesting is the sample plat. क्योंकि जब तक आप ये घर अंदर से नहीं देखेंगे वर्चुअली तब तक आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको यहाँ पर आकर एक साइट विजिट करनी है। लेकिन सैम्पल फ्लैट के बाद मेरे पास आपके लिए और एक सरप्राइज है, तो बने रहिएगा एट प्रॉपर्टी क्लाउड। लेट्स गो। I am going to show you the 730 square feet 2 BHK apartment, approximately 730 actually square feet wise. It is a little bigger than this. Let's go inside and take a look at it. This is your grand living and dining area that comes with a huge deck and I want you to see that first of all. ये रहा आपका deck area जो कि covered आएगा तीनों साइड से। फिलहाल यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, but this will be open for you of course. ये है आपका dining area और right here is the kitchen because of course there's good access to the dining area, but the kitchen is something that I absolutely love because here you get extra space. Here you get a granite slab for your kitchen and hob and your chimney. You get a special wash basin over here and you get this beautiful niche balcony. Now this will be until approximately 3 feet of height and you know that there'll be storage here, and this would be the niche balcony which will again be open but be covered from 3 sides. And you should also take a look at the flooring which would be wooden finished ceramic tiles so that they have a long life. And here is the common toilet and wash to the house. Now this one comes with these beautiful designer tiles on the floor and the wall as well, and also comes with a glass shower partition. And now you are wondering कि मैं कहाँ जा रही हूँ? Well, come inside with me and I'll show you the dry utility area. Now this space is very big enough and there is special provision for your washing machines right over here. And the flooring also remains to be wooden, which also increases life. And while you are coming out of the bathroom, I also want you to notice that there is a 3 mm tile drop so that wet areas and dry areas can be separated. अब इतना हर एक चीज का ख्याल रखा है तो और चीजें क्यों ना। Come I'll tell you. ये जो एरिया है which should not be wasted, यहाँ पे सिर्फ वॉश बेसिन नहीं आएगा, यहाँ पे you will get a sink and along with that you will also get washing machine points over here too. So you can either place your dishwashers over here or either ways because we've just seen the space for washing machines outside. अब हम देखते हैं किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम को भी दी हुई है एक खूबसूरत सी नीच बालकनी राइट ओवर हियर एंड दिस इज टेंटेटिवली द हाइट जो कि हमने किचन में देखी। दिस इज हाउ टॉल इट वुड बी एंड हियर इज योर नीच बालकनी दैट अगेन कम्स विद वुडन फिनिश्ड सिरेमिक टाइल। मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। This is the master bedroom and it also comes with an attached toilet and wash and pretty good space for your wardrobes and the bed and everything. बाथरूम के अंदर जो आप ग्लास शावर पार्टीशन देख रहे हैं वो भी वैसे ही मिलेगा आपको। ये जो डिजाइनर टाइल्स हैं ऑन द वॉल एंड द फ्लोरिंग, इवन दिस विल बी अ पार्ट ऑफ इट।
Now, if there is a balcony in the living room, if there is a niche balcony in the kitchen and the kids' bedroom, तो master bedroom को क्यों पीछे छोड़ा जाए? यहाँ पर भी है आपकी niche balcony. You can take a good look at it. And if you think this is over, not yet. I told you I have a lot more to show you. चलिए बाकी की प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे और क्या-क्या होने वाला है. Let's go. जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था that I'm going to be showing you a lot more. और यहाँ पर हम आ चुके हैं into the clubhouse. यहाँ पे you can see this beautifully decorated banquet hall, and at one of the corners is the library. चलिए library को जरा करीब से देखते हैं. And this is the beautiful badminton court. There's something else that I need to show you. अगर इतने में ही आप खुश हो गए हैं तो wait for more. चलिए मेरे साथ. 50 plus seats in this auditorium. Take a round look at it and then I'll tell you more about it. And now I have to tell you the main part, that if you want to book a property over here or you want to come and do a site visit, how is that going to happen? It's very simple. नीचे कैप्शन में there is a link mentioned जिस पे आपको करना है सिर्फ एक बार क्लिक. जैसे ही आप करेंगे क्लिक, आपकी इंक्वायरी आ जाएगी हमारे पास. And without any brokerage charges, without any hassles, we will bring you right over here to show you the whole project. सोचिए अगर वीडियो में ये इतना ग्रैंड लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, तो reality में how beautiful it is going to be. Now very quickly go and subscribe to our channel and click on the link below, or if you have any queries mention at the comment section. तब तक मैं देखती हूँ एक movie and I'll see you in the next video. Thank you.